you put an athlete on a daily of a 500 रुपए और वो सामने से जाके दाल और चने खाएगा तो how is he going to grow? See, a lot of people say, आप इंटरव्यूज़ में देखते होंगे बड़े क्रिकेटर्स फुटबॉलर्स जो भी हों, हम ग्रास रूट लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे को हम इम्प्रूव करना चाहें. ग्रास रूट लेवल्स इम्प्रूव उस वक्त होता है जब आप जो स्ट्रगलिंग होता है ना प्लेयर, उसके ऊपर आप पैसा लगाएं. Welcome back to another episode of DN Sports Podcast interview, and we have a very special guest here today. I'm not going to take his name. I'm going to just read his credentials first. So he is ITF International Tennis Federation Level 2 certified coach, Pakistan under 14 team captain, Pakistan number 1 former tennis player under 13 to 16 years, World Junior Tennis representation for Pakistan, Junior Davis Cup representation for Pakistan, 4-year scholar athlete at Augusta University. So here we are with Nameer Shamsi. Nameer, मैं by the way जब तक पढ़ रही थी, I think पूरी thesis तो हो चुकी थी तुम्हारी bio में. पता नहीं, I don't know if you need to clap for that, but thanks for the clap. But Nameer, मुझे एक चीज़ बताएं before you get on introducing yourself. You know, usually when we are growing up, हम लोग हर किस्म की sport को एक पकड़ लेते हैं, ठीक है? And I get very intrigued by the fact that how can one person just stick to a particular sport? So first, go on introducing yourself and tell me why tennis. So, it's a funny story. I went to Canada in 2004 with my family. And I came back because I was there for the whole summer. So all my khalas fed me a lot of food. I came back as a very slightly chubbier kid. So I think I was 10 at that time, and my dad was like, listen, it's better if you start playing a sport. So I started playing cricket at Rashid Latif Academy, and I was playing tennis at Beachu Club with Sir Saeed Mir. I don't know if you've heard the name. Yes, I have. Old coach, a very brilliant coach. So I started playing there, and unka ek local tournament tha, so I think I reached the finals of that first local tournament. And my mom also saw that I was losing weight. And then my dad was like, okay, you know what, your first tournament and you're reaching finals. And he was like, how do you feel about this? And I said, you know what, it feels easy. To be honest, when I was going to the nets for cricket and all, I thought that was a very big grind. You know, it was difficult, and also I was waiting too much, like 7 people, 8 people bowling, जब उसके बाद number आता था या उसके बाद batting का number आता था. तो I was like, you know what, this feels easier. And my dad was like, you know, you can do any sport in Pakistan, but he really wanted me to focus on tennis because he said it was recognized worldwide. He said, you want to go for education, you want to go for college, it's really going to help you. And that was pretty much it, you know. As a 10-year-old, started playing tennis, and then slowly got into the tournament structure जो यहाँ पे हो रहा होता है. And alhamdulillah was kept doing fine, reaching semi-finals and finals, and then I won my first national when I was 13. And then it got serious. And then that's when you realized that. So my father was like, okay, you know what, you won a Pakistan national, let's try to get you to the next level. And that was just how we started our tennis story. And 20 years down the road, still attached to it, you know. So quite interesting. So you started off with cricket. I think cricket is basically the primary of sports. When you're growing up, every kid has a bat. Yep. Bat and a ball. Bilkul. And then how they saw you lose weight and they pursued you to go towards tennis, and then you actually excelled in that sport. Yep. And that's how you... Okay, Nami, मुझे एक बात बताओ. Parents का factor कितना important होता है in a child's vision or love for a particular sport? Like for you, it happened because your parents pushed you towards another side. Maybe you would have been a cricketer today. Who knows, right? Do you think it plays a very important role? See, I would say it plays a very important role in a sport like tennis. I'll say that because there's no coaching involved in tennis. So let's say if you're on the cricket field or a football field, there's a manager, there's a coach, you're constantly talking to them. In tennis, when you're on the court, you cannot have any sort of
communication with anyone outside. So those first particular years, how your parents or your mentors or your coaches, how they're building you, they're keeping you mentally positive, is that's what matters the most. So let's say if in my first 3-4 years, let's say my father wasn't as involved, because it's also a new sport, not a lot of people know the correct way of it, I might be drifting away or might be training at the wrong time. So the positivity part is very important, because it's a one-to-one sport, it's an individual sport. So I'm battling my own issues by myself. I can't talk to anyone in the match. I can't look at the coach. I can't go speak to my parents, okay, my forehand or backhand is feeling off, let's say in cricket, someone is playing a match and, at like a timeout, he's like, yaar, mujhse cover drive nahi lag rahi, so the coach will be like, you can tweak your left shoulder a little or something like that. So I guess maybe them building up my character, especially like if I would maybe come home from like losing a match. So my dad understands the anger part of it. Like, yes, if a tennis player gets angry, probably they might break a racket or they might do some tantrums and all. But the thing is, in these tantrums, it also builds character. You have to understand the element behind tennis. It's an individual sport. So I guess that's why parents is, getting them involved is more important. और यहाँ पे आई थिंक पेरेंट्स आजकल के जो बच्चे खेल रहे हैं, आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड छोटे बच्चों के साथ, विच आई थिंक इज फाइन टिल you're doing the parenting job, not the coaching job. So my dad never did the coaching job. He knew that he had to financially help me, and off court he had to keep me motivated for me to do well, but he wouldn't come on the court and tell my coach कि यार इसको ऐसे खेलना है. But today, when I see, even with some of my students running an academy now, I see parents are involved a lot. And I'm not a big fan of that, because it just makes you vulnerable in difficult situations, because it's an individual sport. You are the one who has to fight your own battles. So I would say, yes, it does have an important role, but mostly in like the beginning stages. अच्छा, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था. सईद मीर क्लब होता था, आई थिंक रॉयल उडाइल बन चुका है. सो बैक इन द डेज आई वुड गो विद माय कजन्स एंड I would do swimming, and I would just cross the tennis court and I would look at it, and for me it was a very cool, elite sort of a sport, right? You're wearing shorts, like a proper, you're in your element. And I would always look at my mom and I'd be like, please mujhe andar jaake tennis khelna. She's like, no, stick to one. You're swimming right now, you're not going to take two. You're not going to take two things at the same time. And I would be like, oh my god, this is such a cool game. That is something that I missed. But having said that, now if you guys don't know, मैंने अपना थोड़ा सा बचपन का ड्रीम फुलफिल किया था by getting in touch with Nameer a couple of years ago. I think 2 years, 3 years pre-COVID, right? COVID. He's a coach. So मैंने जाके नमीर से थोड़े से सेशंस लिए थे, and I don't know why I stopped. Maybe because मेरा right side का bicep ज़्यादा मोटा हो रहा था compared to the left side. No, kidding. But I just stopped because obviously work, other things came in play. I would love to go back again. He's an amazing coach, by the way. So Nameer, tell me something. I came and sort of like, because I wanted to be the jack of all in sports. Never wanted to have a particular skill. My first love is cricket, but I want to like play all kind of sport. When I came and started learning tennis, I think in 4-5 sessions, I remember you telling me, Saira, 1-2-3-4 sessions के बाद, you'll actually know how to also serve. When it comes to sports, एक age factor भी बहुत important होता है. With golf, it can go on for years, even when you're old. But with cricket, you have a retirement age. With tennis, you also have a retirement age. If a person like me comes at this point in time and tells you, I want to be a tennis player, it can't happen, right? See, there are two reasons for that. One, it also depends if you've played racket sports. So tennis is, in the beginning development stages, more cognitive, It's all about hand-eye coordination. So let's say if a great athlete, brilliant athlete from like rugby or cricket come and they're like, I want to be a tennis player at the age of, let's say, like 25 or 26. So it's going to be difficult for them to like pursue that sport, because you can be a great athlete, but if you don't have that hand-eye coordination, and also that becomes difficult. But let's say, so if you're trying to pursue it professionally, yes, difficult. But if, let's say, you want to play at club level or leisure, just for leisure, just
for being active. Just for if being nothing active, else. yes. I think tennis is the only sport that you can play like till like you're like 80. There's like still like world tournaments happening 75 and above, 85 and above, and people are pursuing the sport because it is actually easier on your legs and on your body. So I wouldn't say there's much of a problem for anyone coming, but yes, I would say that if you've played any sort of racket sport, like be it badminton or table tennis, anything, your coordination with the racket and the ball becomes easier, and that's you can pick up, and then you can pick up easily faster than so any other person. let's say in your case, if you've been so sporty and you've been playing a lot of sports, you'll pick it up really quick. But let's say for someone who comes with you who hasn't been playing a lot or doesn't play a lot of sports, it's going to be difficult for them. I have a bunch of females or males coming to me who are like regular at the gym. You look at them and you're like, wow, that's an the amazing epitome of the body, you know. And then they suck. Because because they don't have the coordination. They don't have the coordination, and then they're also very stiff, so because the more you obviously. Yes. So sometimes you look at an individual and you're like, wow, he is what I want to be in like terms of my body. And then when you see them play on the tennis court, you're like, okay, maybe the sport's not for them. So something I realized was that I get a bunch of people coming to play tennis with me just for leisure, not going into the professional system. And if they've played any racket sport in their school time, college time, they pick it up really quick. I would say, when is the latest that you can still feel like you can go into nationals when you're playing tennis? Depends on what country you are. Or let's talk about Pakistan. So, sad reality about Pakistan tennis right now. Every time I have to talk to someone and we talk about like sports in Pakistan, it starts off with like, I would say it's a sad reality for the others, but a very happy reality for the two individuals I'm going to talk about. So, Akil Khan and Asamullah. Pakistan number 1. Akil Khan lives in Pakistan. Asamullah lives outside, but has been in the US Open. He's a finalist there. He's doing really well. You know how old they are? 43. Both of them. Yes. Whoa. Fit as hell, doing really good, grinding, but they're 43. On paper. Maybe, I don't know, Maybe they're in the late 40s, 50s, who knows? And they are still killing it. So, Pakistan number 2 jo hai, he's 20. And he still can't grind it out to win against them. So, the sad reality is that I personally feel why Pakistan tennis doesn't do good is because tennis, being an individual sport, you have to compete with the best to be the best. So let's say you come to me for, say, being a great coach in Karachi, or you go to the best coach in the world in Florida. And if you're not competing, if you're not playing matches, there's no point. I can't help you. No other coach can help you. So I think what we lack in the tennis system here is a constant tennis tournament schedule. Ab nationals होते हैं पाकिस्तान में, they start at the end of October or the first week of November or third week of December तक जाते हैं. So 6 or 7 back-to-back tournaments, great. But why don't you periodize that throughout the year? So what are the individuals doing for 10 months? They're training for what? So it's supposed to be like 2 months training, 1 month of tournament, 2 months training, 1 month of tournament. जो international system है, Grand Slam हो गया, exactly. ये सारे so like I remember you were just talking about tennis being an elite sport. Tennis is only an elite sport because of one reason, because of the traveling costs. It's really not because of the rackets or the balls. आप cricket का bat लेने जाओ अभी, if you want to get that Gray Nichols bat, it's going to cost you like 3-4 lakh rupees. Are you serious? Yeah, if you want to use Babar Azam's bat or you want to use Rizwan's bat, that's going to cost you money. Even the tennis equipment's going to cost you money. But अब मैं, for the first time I traveled to Sri Lanka, for an ITF tournament. You also have to live at the hotel they're telling, you also have to so they dictate, they're going to tell you what hotel you're closer living to the place, at, closer this, to the that. So 6 लाख रुपए खर्च किए और मैं दोनों में first round और एक second round हार के आ गया. So now when you come back to your financer, be it your father or be it your sponsor. So the federation is not paying. I wouldn't say they don't pay. They do invest in whatever way they can. It's a chanda system. To be honest, how madrasas are run in the country, that's how our federation is run too. They have some employees
and they have some systems and they have some grants, you know. Yeah. So they're mostly relying on these grants. If they come into a model in which they can get self-sufficient, Yeah. They don't have to rely on they don't have to rely on anyone. So external. if you have a great place, Yeah. lease it out to some coaches, you know, lease it out some people, let them pay the rent, you know, let them make money, and then you're also creating something. And lastly, I would say the biggest reason why tennis is not doing good is there's no contract system. Okay. So I think in terms of federations, PCB, hockey, and tennis, these are the three federations that are actually कोई 8-8 7-7 federations नहीं है. They're not It's ऐसा one. कोई Yeah. fiasco नहीं बना. Yeah. There's just one. We know it. You talk about cricket, you know it's PCB. You Yeah. talk about tennis, you know it's PTF. Yeah. तो इनको आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट्स देने चाहिए. आपके जो टॉप 8 टॉप 10 प्लेयर्स हैं, उनको आपको मंथली स्टिपेंड जो भी हो, जो आपको सूट करे, आपको 10,000 देना है या 1 लाख रुपए देना है, आपको कहीं से स्टार्ट करना चाहिए. हाउ यू आर गोना स्टार्ट दैट इज कमिंग इन अ मॉडल दैट यू कैन यूज इट. हाँ, होता ये आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे इनका, फिर 3 महीने तक अगर कोई स्पॉन्सर पैसे नहीं देगा या ग्रांट नहीं मिलेगा, तो द अदर गाय इज रिलाइंग ऑन दैट मनी. सो आई वुड से we do have the expertise. Pakistan has two level 3 coaches. So level 1, level 2, level 3. Yeah. By the ITF, the level 3 is the highest. Okay. And you're level 2. So okay. Hopefully by I can't give my level 3 before my 30s. Okay. So next year inshallah. Okay. It's a criteria? Yeah. Okay. So inshallah next year, it happens in Valencia in Spain. Okay. So hopefully the plan is to go next year. More than that, we have 2 level 3 coaches who are doing a great job. Yeah. Pakistan is, let's say, when you talk about the ITF, there's like these recognition systems. Yeah. I'm not going to go into the depth of it. It's like gold, silver, bronze, white. Yeah. We're in the silver category. We get a lot of fund. Yeah. We get a lot of it, but the thing is, it's not managed properly. Yeah. It's not, there's no vision about it. So I would say contracts, I would say the PTF needs to, ग्रास रूट लेवल पे बहुत टेनिस है. आप पेशावर जाएं, आप पंजाब जाएं, इतनी टेनिस है, इतना बच्चा टेनिस खेलता है. बट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से छोटे बच्चे यहाँ पे टेनिस खेलना छोड़ रहे हैं. दैट इज़ ओवर एज चीटिंग. अच्छा, we're gonna get to that. I want to talk about this. I want to like go into details with this. मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद we're gonna come back and talk to Nameer about. First, I'm gonna get on to the federation bit. Like, yeah. We will. See you guys. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हाँ, तो मैंने नमीर को उसी वक्त पॉज कर दिया था बिकॉज पहले नमीर, बिफोर वी गेट ऑन टू द एज एस्पेक्ट, when we talk about federations, and we're not here to pinpoint fingers at any particular institute or organization, but I've noticed कि पाकिस्तान में बहुत pressing issue है. You know, you are losing out on really great athletes on a year-to-year basis because grassroots level पे उस किस्म की बेसिक फंडिंग उनको नहीं मिल रही है. यहाँ पे सबका डे वन से रोना है कि यार we have to foot the bill, our parents have to sponsor us, we have to go abroad, do certain level of practice matches, get ourselves to a position where we are more experienced to go and compete on an international level. अगर कोई fortunate family background से नहीं आता और आपको federation भी नहीं दे रही है पैसे और आपके पास sponsors भी नहीं आ रहे हैं, because obviously like whatever, it's a particular A kind of sport, it's not cricket. Where do you go? So on a grassroots level, Pakistan में, are you seeing that tennis would have a scope, and how would it change? See, let's speak about where the federation is. Yeah. Punjab. So if you compare Punjab to Sindh, comparing Sindh to Punjab, yes, there is a chance in Punjab for grassroots level पे फिर भी काम हो रहा है क्योंकि वहाँ पे public courts बहुत है. कराची में आप कोई public tennis court नहीं है. If you want to play tennis, let's say you wanted to play tennis, you came to me, I was like, this is the prescribed bill that you have to pay for the class and the court if you want to rent it out. Yeah. Where can I go play tennis by myself? There's no place in Karachi. Let's say coming to Punjab, when we were speaking about the federation, Pakistan Tennis Federation के elections होने थे 8 महीने पहले, अभी तक नहीं हुए. It's because जो हमारी sporting body है, PSB, Pakistan Sports Board, it's all over the place.
they don't even know what's going on. कुछ पता ही नहीं है कि किसके elections कब होने हैं. And to be honest, Saira, I don't think you can even blame them. Look at the halat of the country, you know, Yeah. in terms of political turmoil and economical turmoil. एक ठंडा system एक बन गया But है. shouldn't it be a way of actually promoting sports so that people have some sort of a comic relief away from politics, where they can actually get the youth to focus more towards some movement, some activity based stuff? Have you gone to Islamabad? Right? Yeah. So have you seen the big stadium, the PSP stadium? You know, जो Asian Games के लिए बना था. Yeah. So I've gone and done my nationals over there. So if you look at that facility, it's huge. It's great. Huge. It's huge. Now look at the dorm rooms there. Yeah. You put an athlete on a daily of a 500 रुपए और वो सामने से जाके दाल और चने खाएगा तो how is he going to grow? The thing is, you get a sponsor and you get 10 लाख रुपए के sponsor. 8 लाख रुपए तो आप prize money में लगा देते हो. Give them less prize money, give them a way of like enjoying the tournament, you know. Give them good food, give them good lunches, give them good dinners, give them good transport. You know, उधर पानी नहीं आ रहा होता. There have been multiple cases that I had to walk from PSB because I was dorming there. When I went to live there for the first time, my mom came to drop me. Alhamdulillah, coming from a privileged background, my mom was like, no, I'm not going to leave here. But my father was like, no, he has to stay here. So he learns the sport. The point is, there are so many problems like गाड़ी नहीं है टेनिस कोर्ट पे जाने के लिए. कैसे आओगे? करीम से आ जाना. चलो करीम से आ जाऊंगा. 1000 रुपए करीम वाला लेगा. खाने पे मैं 1000 रुपए लगाऊंगा. कपड़े मैं खुद दूंगा. आप मुझे 1000 रुपए दोगे एज अ डेली. So sport is, anyone who pursues sport, yes, they do want to do good and they have a vision, but it's also 90% monetary based. You know, all these athletes are wanting to win because they're winning. Yes, they want to win, but they're also getting compensated for winning. So you don't have to compensate them generally for just monetary. Give them a better diet. Give them better food. I want to talk about that. As you're saying कि दाल चने खा के बाहर जा रहे हैं, मतलब कि are you telling me a proper athlete doesn't have a set diet? See, एक गरीब बच्चा आया है पंजाब के किसी गांव से जिसने पूरी जिंदगी गुड़ रोटी खाई हो और वो गुड़ रोटी खा के नेशनल्स जीत रहा है. तो इसका ये तो मतलब नहीं है आप उसको पूरी जिंदगी गुड़ रोटी खिलाएंगे. आपने उसको मॉनिटर करना है, आपने उसकी प्रोटीन को मॉनिटर करना है, आपने उसकी विटामिन्स कैल्शियम्स को मॉनिटर करना है, क्योंकि इट्स अ नंबर्स गेम नाउ. आप बाहर जाएं कोई भी स्पोर्ट खेलें, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस नाउ. सो a guy who doesn't have sufficient protein in the third set, he's going to cramp easily. That's a given. So the federation, I personally think, if tennis is to improve in Pakistan, the federation needs to stoop down a little lower and they need to understand the problems that are being faced by the players. So I'll give you an example of this player. I don't know if you would like it mentioning me. No, please, go ahead. A very good tennis player, Muzammil Murtaza. He's Pakistan number 2. 2 or 3. उनका डेविस कप का अभी पाकिस्तान का मैच था लिथुआनिया के अगेंस्ट. He didn't play that. Why? He went to America. He found a private sponsor and he's there since 3-4 months. Acha, when you talk about sports, what's the best thing for a sportsman is representing their country. There is nothing better than that. That's number one. आप Wimbledon टेनिस में देख लो, you look at biographies from Roger Federer, Serena Williams, they say मैंने जब डेविस कप खेला जो मेरी वो फीलिंग थी जीतने की, नेशनल लेवल पे वो patriotism, nothing beats it. अब एक बंदा एक डेविस कप छोड़ के जा रहा है. So we are faltering somewhere. We are faltering somewhere. हम कुछ गलत करें, बात उस पर आ जाती है, oh my god, ये कैसा आदमी है, ये चला गया when we needed him for our डेविस कप. आपने अभी तक उनको डेविस कप की पेमेंट तो दी नहीं है, तो वो क्या करेगा इधर रह के. एंड आई ऑल्सो पर्सनली वर्क विद द PTF. आई एम हैंडलिंग द अंडर 14 पाकिस्तान टीम. नथिंग अगेंस्ट द PTF. I would just say it's just a recommendation that stoop down a little and understand these tennis players emotionally. Listen to what they're going through. Give them some contracts. Give them some money. कोई कुछ दो. आप
साल के 6-7 टूर्नामेंट करा के, अच्छा जो जीत रहा है वो तो ठीक है, व्हाट अबाउट द गाय जो फर्स्ट राउंड हार रहा है, जो सखर से आ रहा है खेलने, जो he's bearing the cost. एवरीथिंग. Yeah. अगर आप फर्स्ट राउंड नहीं पहुंचते, मेन राउंड नहीं पहुंचते, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलता. ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिलता है? 3,000 रुपये. अच्छा पैसे हैं सायरा, पैसे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे ऐसे नहीं है कि पैसे हैं. आपको जो पैसे मिल रहे हैं टूर्नामेंट के लिए, आप प्राइज मनी कम कर दो. बट आप एटलीस्ट उनकी फैसिलिटी, अकोमोडेशन, अगर आपको टेनिस को स्कोप को बढ़ाना है, यू वांट मोर इंडिविजुअल्स टू प्ले, spend a little more money on the individuals who are struggling rather than the individuals who are winning. Because the individuals that are winning, they will win, they'll go outside and win too. But what about the people जो इतनी दूर से आके ट्रैवल करके, मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूँ. मैं कराची से दिसंबर गया अपनी टीम को लेके, जूनियर्स को, एंड आई प्लेड द मेंस टूर्नामेंट. सो मेंस के बंदे को डेली वो ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलती. आई वाज लाइक क्यों? जूनियर्स को आप देते हैं, मेंस को क्यों नहीं दे रहे? खर्चे तो हम सारे ही करते हैं. देर लाइक वो हमारा एक रूल बना. चलो अगर मिल भी जाती है, एक रेलवे का एक 3,000 रुपये का टिकट दे देते. व्हाट एम आई गोना डू विद दैट 3K? थिंकिंग ऑफ इट इन इवन द मोस्ट वे कि मैं बिल्कुल ही इस फैमिली से आ रहा हूँ दैट आई नीड सपोर्ट. मैं 3,000 रुपये का, दिन की 700 रुपये डेली का, अगर मैं हार जाऊँ, और बैक टू बैक टूर्नामेंट्स हैं. अब आप सोचें 6 टूर्नामेंट्स हैं बैक टू बैक. एक प्लेयर है जो सेकंड डे या थर्ड डे पे हार जाता है, तो वो 4 से 5 दिन रुका हुआ है उसी जगह पे, बिकॉज ही नोज ही नीड्स टू प्ले द नेक्स्ट टूर्नामेंट. वो 4 से 5 दिन क्या करेगा? व्हाट अबाउट द मनी ओवर देयर? सो दैट्स व्हाई आई से, rather than spending it on the prize money part, spend it on the tournament. Provide these guys with, you know, आप बाहर जाते हैं, there's a car that comes to pick you up for a tournament. You get a level of recognition because you possess a skill that probably the other person does not. So you need to obviously give a person some sort of an appreciation कि यार you are. तो अब उसी बात पे now Muzammil, he's training in Nevada. He got a private sponsor and he's training other places. जो तनकीद करने वाले हैं वो अभी भी तनकीद करेंगे कि उसने पाकिस्तान को नहीं खेल के जा रहा और हमें इसकी इधर ज़रूरत थी. बट अगर मैं उसको इमोशनली समझूं, I think he made the right move. Because वो 10-10 हज़ार रुपये के लिए क्या क्या करे, कितना करे. हाँ, उसकी लाइफस्टाइल came from a very poor background, उसकी lifestyle definitely change. But if he wants to improve, because it's an individual sport, it is an individual. You have to travel, you have to play. So I think he made the correct move. If I was in his situation, or if I actually had to give a suggestion to someone, I would also do the same thing, regardless of what people would say. And when you're talking about this, मुझे एक अपना किस्सा याद आ गया कि couple of years ago when I was competing on a national level for high jump, नाम तो मेरा आ गया था, but who's going to foot the bill? So I went up to my dad and I had a choice of not actually going to Islamabad. So I said, but I want to go and compete. So got my ticket, got my hotel accommodation, ran to the stadium myself, searched for the coach, the right person के मेरी टाइम अबारी कहाँ है, क्या है. न्यूट्रिशन तो बहुत दूर की बात है, खाना पीने का तो पूछा भी नहीं. वो केला पकड़ा दिया कि जस्ट हैव अ बनाना, एनर्जी आ जाएगी. ओ दिस इज़ योर नेक्स्ट स्पॉट, जाएँ खड़े हो जाएँ, खेलें नहीं, वो गलत हो रहा है, ओके आपका ख़त्म हो गया, नाउ यू कैन लाइक. सो आई केम, competed, had no training facility, went back to the hotel, got my ticket, went back to Karachi. Just because I wanted to, because I qualified for the nationals. हर किसी के पास इतनी fortunate opportunities नहीं होंगी. मैं तो फिर भी मैं कहती हूँ I was still unfortunate because I didn't have the right grooming from the right coaches or the right diet plan. मतलब कि ऐसे national level पे अगर आप जाके बोल रहे हो कि बस कल पहुँच जाना इस जगह पे और compete कर लेना, सब खड़े हुए हैं, and you have like, और वो जवाब होता है वो भी तो कर रहे हैं, खड़े हुए हैं ना, आप भी खड़े हो. Exactly. So that's when I was very disheartened with the whole setup, the system in Pakistan. And I was like, you know, जो मैं कर सकती हूँ, I'll take it as an activity, I'll do the things that I like doing. इस level के domain में जाना is literally like, there's a long way to go. But for some it isn't. See, a lot of people say, आप interviews में देखते होंगे, बड़े क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स जो भी हों, हम ग्रास रूट लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे को हम इम्प्रूव करना चाहें. ग्रास रूट लेवल्स इम्प्रूव उस वक्त होता है जब आप जो स्ट्रगलिंग होता है ना प्लेयर, उसके ऊपर आप पैसा लगाएं, नॉट ऑन द गुड प्लेयर्स. द गुड प्लेयर्स मेक देयर वे. जो स्ट्रगलिंग प्लेयर्स होते हैं, नॉट स्ट्रगलिंग लाइक कि उनको खेलना नहीं आता हो, बट
they're building up, जिनके पास शायद commute ना हो, जिनके पास शायद supporting father ना हो, जिनके पास शायद पैसे नहीं हो, इनके ऊपर जब आप invest करेंगे in any way possible, that's how grassroots tennis or any sport is going to get built up. आपको मैं एक हॉकी की एग्जांपल देता हूँ. Best Pakistan was the best in hockey. It's our national sport, man. Squash में Pakistan was the best. Why is there a reason why there are no hockey players or squash players coming out of Pakistan? It's not because we don't have the facility. आप हॉकी की टर्फ्स देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हैं. आप स्क्वाश के स्टेडियम्स देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं. कोचेस स्क्वाश में जानशेर खान और जहांगीर खान के बाद ये कंसल्टेंट्स हैं हमारे. इनसे बेहतर तो कोई प्लेयर नहीं बना सकता. हॉकी में सलाउद्दीन से तो बेहतर कोई प्लेयर नहीं बना सकता. फिर भी क्यों नहीं आ रहे? इट्स बिकॉज आपने हाथ उठा लिया उन लोगों के ऊपर जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे. फिर जब वो स्ट्रगल करके देखते हैं कि यार नहीं, मुझे यहाँ से कुछ मिलने नहीं वाला, सो टू थिंग्स हैपन. एक, वो या तो स्पोर्ट छोड़ देते हैं, या दो, उसको कोचिंग में आ जाते हैं. You do it to stay connected to it. So I started my tennis academy to be connected to it. But now I'm actually treating it like how a business model is supposed to be treated. Yes, I do have kids on scholarship जो मेरे पास खेल रहे हैं, but उनको भी प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म देने के लिए आई डोंट गिव देम एनी मनी. मैं उनको कोई पैसे नहीं देता. मैंने उनके लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त किया हुआ है, उनके रहने का बंदोबस्त किया हुआ है, उनको कम्यूट करने का बंदोबस्त किया हुआ है. मैं उनको ये दे रहा हूँ ना, दिस इज़ हाउ दे स्टे मोटिवेटेड. आप उनको एक मंथली स्टिपेंड दे दें, वो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि कोई ग्रूमिंग नहीं हुई हुई या कोई विजन नहीं है, वो सबसे पहले जाके कोई फ़ोन ले लेंगे या अपने फादर को घर पे पैसे भिजवा देंगे राशन के लिए. ये तो सिचुएशन है. तो money, monetary, I would say, in terms of for the grassroots level, it has to be spent on the person rather than giving them like an amount. I would say this is how grassroots tennis will improve. Peshawar में, इस्लामाबाद में, लाहौर में बहुत टेनिस है. हमारे एक पुराने कोच थे रशीद मलिक, he is now the secretary of Punjab Lawn Tennis Association. Dude, he's killing it. That guy has like yearly like 20-30 tournaments जो सिर्फ पंजाब के होते हैं, नॉट नेशनल्स. ही इज किलिंग इट. व्हाई डोंट वी हियर अबाउट इट? लाइक हमें क्यों नहीं, इतने लोगों को इस चीज़ों के बारे में इतनी चीज़ें पता नहीं होती. आई वुड से कवरेज एक रीज़न होगा. शायद लोगों को ना पता हो, बट इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड इफ़ यू, ये लोग दे आर डूइंग टूर्नामेंट्स. अब सिंध टेनिस एसोसिएशन है, 1.5 साल से यहाँ पे कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है. 2-3 टूर्नामेंट होते हैं, आपको वही एक बेसिक लेवल का एक टूर्नामेंट हो रहा है, मेडल्स और ट्रॉफीज मिल रही हैं, दैट्स इट. नहीं दो मेडल्स ट्रॉफीज. पता है 50,000 रुपये अगर मेडल्स और ट्रॉफीज के लिए मिल रहे हैं ना, नहीं दो. उन पे लगा दो, उनको वेलकम फील कराओ कि यार ये सीन है. वो धक्के खा के बंदा रिक्शे में आ रहा है दूर से अपने मैच के लिए, उसके पास पानी भी नहीं है, पानी की बोतलें ही प्रोवाइड कर दो. क्यों एक टेनिस प्लेयर खुद खर्चा करे? ही इज कमिंग टू प्ले अ ब्लडी नेशनल. यार यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन दैट पर्सन. ही इज योर फ्यूचर. इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, डोंट कीप द टूर्नामेंट. नहीं करो. आप टॉप 8 के मैचेस कराओ, इन्हीं की हाई क्वालिटी टेनिस देखते रहो. होगा फिर यही कि 42-year-old अकील खान विल बी नंबर 1. वो 20-25 साल से जीत रहा है बिकॉज ही इज टैलेंटेड. ही न्यू हाउ टू ब्रेक द बैरियर. व्हाट अबाउट द लास्ट 20 years? व्हाट देयर हैज बीन. मैंने भी 20 सालों में, इतने सालों में किसी और का नाम नहीं सुना. नो वन. नहीं सुना मैंने. आपको actually it's a story for the world. He got recognized by the ITF. There's been no one who's number 1 of a country for like 20 years. वो कहता है मैं हर साल होता है, अकील खान का आखिरी साल होगा. फिर 6 में से 4 टूर्नामेंट जीत जाता है. हाँ, क्योंकि थोड़े से बूढ़े हो रहे हैं तो क्ले कोर्ट पे जीत नहीं पाते, क्योंकि क्ले कोर्ट इज मोर स्लो एंड ग्राइंडिंग. हाँ, तो थोड़ा सा यंगर बंदा चाहे हार्ड कोर्ट पे, ग्रास कोर्ट पे, ही इज नॉट लूजिंग. सो अच्छा, एक और भी ये रीज़न है वाई आई वुड थिंक लाइक सम ऑफ आवर इंडिविजुअल्स आर नॉट मोटिवेटेड. वो कहते हैं यार कुछ भी कर लो, अकील खान को तो हरा ही नहीं सकते. फिर जब आप अकील खान के बारे में ऐसे सोचो, फिर आप दुनिया में क्या सोचोगे? When you go on an international level. So here when I was playing juniors, under 16 Pakistan number 1, went for Malaysia for Junior Davis Cup and I was doing good. इधर क्लब में जब जाके टेनिस खेलते थे, बादशाह समझ के खेलते थे. Then I went for a year at the Everett Academy. I was playing with like 12-year-olds or 13-year-olds. I was under 16 number 1, and the tennis superstars right now, Francis Tiafoe or like
all the American superstars, I used to train with them. They're 4 years younger to me, and they would be thrashing me. Because obviously और उनकी जो ग्रूमिंग हुई है, उनको जब स्पॉन्सर करते थे तो उनको कोई पैसे थोड़ी देते थे. उनकी एक अच्छा डाइटिशियन था, उनको एक अच्छा कमरा दिया हुआ था. आप PTF में कमरे में रुकवाते हैं, गर्म पानी नहीं आता. आप सोचें इस्लामाबाद की सर्दी में आपके पास गर्म पानी नहीं आ रहा हो 2 महीने 3 महीने, आप क्या करेंगे? सो इफ़ यू रियली वांट देम टू डू गुड, स्पेंड इट ऑन देम. अच्छा गर्म पानी का नलका लगा दो कि वो जो एथलीट है सुबह उठ के नहा के तो आए. वो 2 किलोमीटर दूर जाता था एक जगह पे नहाने के लिए, फिर आके अपना मैच खेलता है. तो मेंटल पीस ही नहीं है. इस तरीके से पता ही नहीं चलता कि किस पे क्या पैसे लगा रहे हैं. आई थिंक लोगों को ग्रास रूट लेवल का मतलब शायद समझ नहीं आता है. जस्ट द फैक्ट दैट इतने आपके इंटीरियर से उठ के कोई बंदा आ रहा है स्पोर्ट्स खेलने के लिए, एक तो दैट्स कमेंडेबल. बिल्कुल. Why is he coming all the way, sitting on a rickshaw to come and play a particular sport? Is it because he wants to come and earn like a short-term money? वो तो किसी भी चीज़ से कर सकता है. Exactly. He's coming for the love of the sport. So if he's coming all the way, aren't you recognizing the talent that you can actually groom and facilitate them in different ways than to say a one off कि ठीक है यार आप वापस चले जाओ. आपने उसके ड्रीम सारे शाटे कर दिए, उसने रिक्शा पकड़ी, उसने कहा यार मेरा तो इतना महीने का खर्चा हो गया, मैं 10 दफ़ा सोचूंगा नेक्स्ट टाइम आने के लिए. 100%. So basically you've let an athlete go. Maybe he could have been big or maybe he could have done something for your country. So grassroots level पे मुझे लगता है लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है. They just use this word because it's a very broader word. It's like we're working on a grassroots level. People think grassroots level का मतलब होता है कि छोटे बच्चे को उठाओ और उसको फील्ड पे फेंक दो. और अगर उसने एक्सेप्शन ही अच्छा कर लिया तो इन सब 99 लोगों में से उसने एक्सेप्शन ही वेल कर लिया तो 99 को साइड पे कर दो और इस एक पे फोकस करो. बिकॉज इस एक को हमने बनाना है एंड देन वी कैन गिव अ रियल लाइफ स्टोरी कि this kid came from nowhere and now this kid is like the next Babar Azam in your particular field, which I'm not saying Babar Azam is any other person. He's obviously shown the world who he is, but does that mean 99 और बाबर आजम नहीं बन सकते थे? ज़रूर बन सकते थे अगर उनको फैसिलिटी मिलती. सो नमीर, ये तो हो गई ग्रास रूट लेवल की बात. तो हम लोग I wanna talk to you a bit. We're gonna come back after a short break and मैंने वापस आके नमीर से कुछ थोड़ी सी और बातें करनी है. So see you guys in a bit. Welcome back. This is the first time मेरे एपिसोड में 2 दफ़ा ब्रेक्स हुई हैं because Nameer has a lot of content and I really have a lot of insights after this. पता नहीं इसके बाद नीचे हमें comment section में कितनी गालियाँ पढ़ने वाली है नमीर, but I feel ready it's yeah we also ready. देखो, anything to promote sports in Pakistan and have a positive image abroad, man. Like, I mean, are you telling me कि जिस तरीके से लोगों को बाहर हमारी image मिलती है, we want to promote the positive side of Pakistan and the only way, one of the ways is through sports also. When you go and represent your country and when you're doing wonders, you know, that's how they say, okay, fine, इस मुल्क में बहुत कुछ है apart from people killing each other. ठीक है? When we come on to the international side of tennis, ठीक है? तो थोड़ा सा जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ग्रैंड स्लैम हो गया, ग्रैंड स्लैम में आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, US ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विम्बलडन है. सो ग्राउंड के भी लेवल्स होते हैं. मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ टू अंडरस्टैंड कि फ्रेंच ओपन में आपके पास क्ले है, विम्बलडन में आपके पास ग्रास है, US और उसमें आपके पास हार्ड है. सो व्हेन प्लेयर्स आर कम्पीटिंग ऑन दिस लेवल, यहाँ पे पाकिस्तान में आपके पास क्ले नहीं है. इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मगर उस लेवल का स्टैंडर्ड का नहीं है. बिल्कुल. एंड ग्रास है यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में. सो ग्रास इज मोर ऑफ एन ओल्ड स्कूल थिंग. अब ग्रास कोर्ट में इंटरनेशनल फेडरेशन भी 3 वीक्स या 1 महीने का, जून जुलाई का 1 महीना होता है जिसमें ग्रास कोर्ट में टूर्नामेंट खेली जाती है. तो पाकिस्तान एक्चुअली एज पंजाब हैज ब्रिलियंट ग्रास कोर्ट्स. बट द थिंग इज मेंटेनिंग ग्रास कोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो 8 महीने ग्रास कोर्ट बंद रहते हैं हमारे. जब सीजन आता है तो थोड़ा सा वो मेंटेनेंस की वजह से क्ले कोर्ट्स हैं यहाँ पे. बट कहाँ है, किधर है क्ले कोर्ट्स? मोस्टली पंजाब साइड, मोस्टली पंजाब साइड में नहीं है. बिकॉज देखें क्ले कोर्ट्स के लिए एंड ग्रास कोर्ट्स के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ वाटर. सो इन सिंध, इन कराची इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो पंजाब में क्ले कोर्ट्स हैं, बट इसे बस समझ लें आप, वो कोई क्ले कोर्ट्स कोई इतने खास नहीं. नॉट सेइंग दैट दे आर रियली बैड, बट I mean, you're not going to develop a pro player on those clay courts. That's for sure. Exactly, मेरा ये पॉइंट था, इसलिए मैंने बात की है कोर्ट्स के बारे में. सो जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, ग्रैंड स्लैम में विम्बलडन हो गया, US ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया,
आप उस तक पहुंच नहीं सकोगे बिकॉज यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप उस फैसिलिटी में कहते हैं ना होम ग्राउंड में आपका एडवांटेज होता है, यहाँ पे आपके पास होम ग्राउंड ही नहीं है, ठीक है, आपका एडवांटेज तो दूर की बात। तो जब यहाँ पे आपके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है एंड टुमारो यू एस्पायर टू गो एंड ग्रैंड स्लैम के टाइटल्स पे आप जाओ और खेलो, तो वहाँ पे आप क्ले कोर्ट पे आ जाओगे तो क्या होगा आपके साथ? देखिए यहाँ पे क्ले कोर्ट्स हैं, या पंजाब में आपको थोड़े मिल जाएंगे, बट आई वुडंट से दे आर द टॉप नॉच क्ले Yeah. कोर्ट्स, डिसेंट है, हाँ बट डेवलपमेंटल स्टेज में आई वुडंट से देयर गुड। ग्रास कोर्ट्स भी आपको पंजाब में KPK में बहुत मिलेंगे, बट देर मोस्टली शट डाउन फॉर 8 months ऑफ द ईयर बिकॉज देर डिफिकल्ट टू मेंटेन। जो इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होती है, हाउ द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग, टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, लेट्स से एक ब्रेक्स होती हैं, तो लोग कोई गाने लगा देते हैं, देयर इज़ लाइक सम सॉर्ट ऑफ थिंग हैपनिंग टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। You come to the tennis nationals in Pakistan, it looks like a freaking graveyard. ब्रेक में ना लोग कह रहे होते हैं यार किधर आ गया हूँ मैं, किस डिप्रेशन में आ गया हूँ, हमें समझ ही नहीं आता। लाइक द बेस्ट 2 Pakistan players are competing for the national trophy and it's just a flux of like boredom. You're like, I don't even know what's going on. So the environment also matters. It's not difficult to have एक कोई mascot खड़ा कर दो यार. Think out of the box. If you want a sport to succeed, you can't make it succeed through the best players. You have to make it succeed through like putting in a little bit of your creative mind towards it. You know how the world's working right now with in terms of marketing and all that. So facility यहाँ पे हैं, but I don't think environment है. एक environment नहीं create हो रही. अच्छा, फैसिलिटीज़ की बात करें, हम लोगों ने इतने टाइम से बात करी, यू ऑलवेज कीप ऑन सिंग सिंध एंड पंजाब, सिंध एंड पंजाब, a little bit of KPK. हम लोगों ने एक प्रोविंस को बिल्कुल कम्प्लीटली निगेट कर दिया है, वो है बलूचिस्तान. यू हैवंट मेंशन वंस कि बलूचिस्तान से कोई प्लेयर उठ के आया, या कोयटा से कोई प्लेयर उठ के आया, या खुशदार से कोई प्लेयर उठ के आ रहा है. So I started playing tennis when I was 10. I'm going to be 30 next year, inshallah. 20 years in the sport, I've never heard about a player coming from Quetta even. Quetta is a pretty big city. Yeah, it is. It is. आपके पास क्रिकेट की फ्रेंचाइज है उस सिटी की. I have never seen a player, शायद खेलते हो थोड़े बहुत उधर क्लब्स में उनके होते हैं, मे बी वहाँ पे कोई फैसिलिटी हो, हमें क्या, बट बहुत छोटे लेवल पे फैसिलिटी, नेशनल लेवल पे तो नहीं आ रहे. I have never seen a player even in the top 20 or the top 30 of men's, women's, juniors, under 14, 16, 10, 12, 18, कोई भी आप कैटेगरी ले लो, मैंने नहीं देखा. किसी ने रेज नहीं की अवेयरनेस कि यार इस प्रोविंस को भी थोड़ी सी या तो फैसिलिटी यहाँ पे ला करिए. लोगों को जनरली शौक नहीं है टेनिस खेलने का, और मे बी दे आर क्रिकेट फैंस, हु नोज, क्योंकि क्रिकेट की तरफ आना है. if I would give an answer on this, I would say facility. More than facility, it's just they've deprived that state of like, क्योंकि अपने ऊपर ही सही नहीं कर पा रहे तो बोलते हैं ओके यार अभी बलूचिस्तान के बारे में कौन सोचे, इनके स्पोर्ट्स के बारे में. तो it is pretty alarming. And to be honestly I don't have an answer to how to create awareness in that area, because थोड़ा बहुत तो कोई ना कोई तो आ चुका होता. So since 20 years I haven't seen anything, which is very alarming, very alarming. And I guess the best way to create that environment in that region would be maybe hold some clinics. Maybe hold some clinics, seminars, send some professionals, 2-3 महीने training sessions हो. But आप professional tennis coaches को भी आप भेजेंगे, आप दिन के 1000 रुपए दिहाड़ी पे आप उनको भेजेंगे, बोलेगा मैं क्यों जाऊँ. तो awareness create करने के लिए थोड़ा सा पैसा लगता है. तो पैसा लगाना नहीं है, पैसा लगाते हैं लेकिन गलत तरीके से. जैसे मैं प्राइज मनी की बात कर रहा था, आप पैसा लगाएं बट करेक्ट चीज़ पे लगाएं. आप कोचेस को सही है कम पैसे में आप भेज दें, अच्छी जगह पे रहलवा दें, अच्छा खाना खिला दें, उनको बोलें ठीक है तुमने अपनी ये 3-4 घंटे की क्लिनिक कर दी, अब मैं तुम्हें 2-3 घंटे कोर्ट दे देता हूँ, तुम अपने 4 पैसे कमा लो. वो भी बोलेगा यार ठीक है यार मैं चलता हूँ, क्यों नहीं. ठीक है, फेडरेशन की तो एक बात होगी ना कि हमें पता है फेडरेशंस में कितने लूप होल्स हैं या कितने मसले हैं, मे बी उनको बजट कंस्ट्रेंट्स और व्हाटएवर. ब्रांड साइड पे ब्रांड्स को नज़र नहीं आता है इतना. जब क्रिकेट PSL चल रहा होता है, कुछ चल रहा होता है, यू सीइंग ऑल द ब्रांड लोगोज एवरीवेयर. सो इफ़ आई फॉर इंस्टेंस वर्क फॉर ए ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन, एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि यार हम लोग क्रिकेट में आ गए, हम लोग इसमें आ गए, बट हम लोगों ने इन चीज़ों में अपने आप को देखा नहीं है कि वी आर नॉट पेनिट्रेटिंग इन अदर काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. शुडंट दे बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट दे शुड ऑल्सो प्रमोट इंडिविजुअल प्लेयर्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स?
कि फॉर एग्जाम्पल कोक वुड बी लाइक ठीक है अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पेप्सी है मैं क्रिकेट के साथ हूँ तो कोक आ जाए टेनिस के साथ? देखिए लेट्स से यहाँ पे एक हफ्ते का नेशनल टूर्नामेंट होता है, लेट्स से कोई XYZ बिल्डर्स उसको स्पॉन्सर करता है, उस बिल्डिंग कंपनी का काम पूरे हफ्ते में होता है। ओपनिंग सेरेमनी में उनका एक CFO आएगा, क्लोजिंग सेरेमनी में एक CEO आएगा, दैट्स इट। एक बड़ा मीडिया वॉल में लग जाएगी, लोगोस लग जाएंगे, that's it। स्टैंडीज लग जाएंगी। उसने बोला मैंने अपनी CSR एक्टिविटी पूरी कर ली करनी है, मैंने थी कि interview मुझे दे दिया साल है। का 1-2 टूर्नामेंट कराना था, ओके आई एम शोइंग इट मैंने टू द वर्ल्ड। चेकबुक चेक दे दिया है, हाथ हिला दिया है, ट्रॉफी दे दी है, जो आया था उसका इंटरव्यू ले लो कि भाई उसने इस पे अपना पैसे डाले। आप क्रिकेट में देखें अभी PSL हो रहा है, इवन तक के कॉलर पे अब लोगों की स्पॉन्सरशिप लगी जगह नहीं है, कॉलर जगह पे नहीं लगा है, है। हेलमेट्स भरे हुए हैं, ट्रेनिंग किट की अलग आप अलग क्यों नहीं sponsor- ट्रेनिंग Yeah, किट देते हैं इन्हें? yeah, आप क्यों नहीं टेनिस प्लेयर्स को ट्रेनिंग किट दे रहे हैं? आप Yeah. इतना पैसा लगा रहे हैं, Yeah. गिव 30 मेन ड्रॉ के प्लेयर्स को आप ट्रेनिंग किट दे दो जहाँ पे आपका और स्पॉन्सर है। नमीर ये पूरी टीम्स हैं, Yep. ये टीम्स हैं जिनमें से इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी अलग पैसे मिलते हैं, उनके आप- अपने but स्कोरर्स आप- होते हैं। but ये आप- इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इसमें आप 1 2 3 4 लोगों को साल में ग्रूम नहीं कर सकते हो। आप अपने आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, आप अपने पेजेस पे लगा सकते हैं। अब आप ये भी तो देखें क्रिकेट क्यों चल रहा है, स्पॉन्सरशिप इसलिए रही है क्योंकि पैसा भी जनरेट हो रहा है, आप टिकट प्राइसेस हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेनिस में आप फ्री में भी कर दो ना, 40 लोग भी नहीं आएंगे। माई पॉइंट लाइक आई सेड, एक नेशनल फाइनल हो रहा है, आप कोई माहौल तो बनाएं, मेक इट अ बिग थिंग, मेक इट लाइक हाउ पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आपने एक इतनी डेड एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई होती है कि जो उस टूर्नामेंट के भी लोग होते हैं ना, जैसे मैं लास्ट फाइनल जो मैं इस्लामाबाद गया था, आई डिडंट वांट टू वॉच द फाइनल, आई वेंट आई स्टार्ट प्लेइंग टेनिस एट द बैक। क्या हो क्या रहा है समझ ही नहीं आ रहा होता। लोगों को उनके नाम भी नहीं पता होंगे, जो आएंगे उनकी फैमिली क्लोज फैमिली फ्रेंड्स होंगे, हाथ मिलाएंगे, सलाम करेंगे, ओके यार बेटा Medal वेल जीते, डन, trophy जीत आपको गया, पता है क्या पूरे थोड़ा टूर्नामेंट में scientific हुआ cycle क्या है। है, हाँ। यू नो। सो कुछ लोग हैं जैसे मैकडोनल्ड्स डज अ वेरी गुड जॉब इन प्रमोटिंग टेनिस इन पाकिस्तान, बट देयर आर आल्सो कंस्ट्रेंट्स। Constraints can be managed by the federations. If the federation says कि मेरे पास इतनी बड़ी जगह है, तुम एक बैनर लगा लो, पूरे साल बैनर लगाओ, हर बार कोई भी बच्चा इसी के साथ तस्वीर खिंचाओ, प्रमोट करो, लोगों को बिल्ड तो करो। क्रिकेट मेरे हिसाब से इस मुल्क में सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करता है। कल को टेनिस करना शुरू कर देगा, रेवेन्यू जनरेट, आप देखना सारा स्पॉन्सर टेनिस पे आ जाएगा। यू थिंक इतने करोड़ रुपए लगा रहे हो, कोई रिटर्न्स नहीं हो रहे हैं? It's all about ROI. बहुत हाई है, बहुत हाई है ROI, इसलिए उसमें पैसा जा रहा है कि भाई एवरी ईयर जितना पैसा डाल रहे हैं उससे ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो इसको अभी सब कुछ चीज़ों को साइड पे कर दो एंड एक चीज़ पे फोकस करो जो ऑलरेडी चल रही है। वाई जेपरडाइज समथिंग दैट इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर एवरी ईयर? अभी कोई आई थिंक पंजाब में कोई आई थिंक 2 months before एक टूर्नामेंट हुआ था which was the prize money was 2.5 million, which is a very good amount in terms of, and it was just for the top 16 players, men's and women's tennis पे तो मैं अभी आ नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना उसके मतलब बारे पहले में स्पोर्ट्स, फिर एक पर्टिकुलर जॉनरा ऑफ स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद आ जाते हैं जेंडर, फिर उसके बाद जब जेंडर पे आ जाता है मतलब बेसिकली इट्स लाइक अ हायरार्की। आपको शायद एक 5-6 ब्रेक्स लेनी पड़ेंगी फिर आपके उसमें अगर हम इस पे आएंगे। बट माय पॉइंट इज कि एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ, that was a good tournament because they spent money on the players. You know, the players felt protected. The players felt कि you know what, there's a guy जो 8वां रैंक का प्लेयर था, 10वें रैंक का प्लेयर था, उसको पता था मैं फाइनल तो नहीं पहुंच रहा बट I feel motivated. So the 8th ranked and the 10th ranked guy went back and started training. So problem happens, these players they start getting cut off. जब आपको पैसे नहीं बन रहे होते, गरीब ख़ानदान से आते हैं, अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते, तो फिर कोचिंग में लग जाते हैं, बॉल पिकर लग जाते हैं, ये सब हो जाता है। तो आप कितनी वीडियोस आजकल देखते होगे कि पुराना खिलाड़ी था आज पराठा बना रहा है, यू नो। तो ये फेडरेशन का काम है। यू हैव टू, हमारा मुल्क है फिलांथ्रपी पे बेस्ड है, सही है ना, तो हमारी फेडरेशन भी फिलांथ्रपी पे बेस्ड है, सही ना। It's a madrasa system. I'll say it again. Like I don't shame away from it because I say my Pakistan Tennis Federation is actually very good. We're actually a very good tennis nation. We're in the first group for Davis Cup. We have Assam. We have Akil. We have got an international tennis back. Now make it और hire people. Grand Slam में आप लाओ लोगों को, फाइनल्स पे चले गए थे। आप उन लोगों को लाओ जिनको पता हो स्पोर्ट इज अ बिजनेस। सही है। PCB
became big by merging with other individuals Yes. who could make their models sufficient. Yeah. लाओ लोगों को अपने प्लेटफॉर्म्स पे लेके आओ. आप इतने इनसिक्योर हो अपनी जॉब के बारे में और अपनी पोजीशनिंग के बारे में कि कोई और आपके फेडरेशन को हेल्प करने आता है या 2 पैसे कमा रहा होता है, तो आप बोलते हो यार ये 2 पैसे क्यों कमा रहा है, ये मैं 2 अगर मैं कमा रहा हूँ और ये 2 कमा रहा है, नहीं मुझे 4 कमाने हैं. तो क्या होगा, आपकी वीरान रहेगी जगह, आपके टूर्नामेंट्स डेड रहेंगे. एंड ऑनेस्टली in the next 5, 6, 7 years when Akil Khan, Assam are gone, There's no one to represent a tennis on a couple of people, national or an international level. इंटरनेशनल लेवल पे मे बी 1 or 2 दैट दे माइट ग्राइंड. जिस दिन उनके स्पॉन्सर्स के हाथ रुक जाएंगे, जिस दिन फेडरेशन के हाथ रुक जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रगल करेंगे. शुरू में हमारी कैपिटलिज्म एक है, कैपिटलिस्ट मार्केट है, वो आके देखता है कि वो यार इसने मुझसे 10 लाख रुपए लिए, अभी डॉलर रेट आपके सामने है, सारी चीज़ें डॉलर में होती है, 10 लाख रुपए अभी इसने मुझसे लिए, टूर्नामेंट खेल के आया फर्स्ट राउंड हार के, वो इस पे तो पैसा ही लगाना बेकार है. सो या अच्छा, बहुत शॉर्ट रखेंगे. एज यू सेड कि 5-6 ब्रेक्स लेनी पड़ जाएंगी अगर लड़कियों के बारे में बात कर लिया. जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू, लड़कियों का टेनिस में क्या स्कोप हो रहा है एट द मोमेंट इन पाकिस्तान? So when I was 14, this is like 15 years ago, we still have the same Pakistan number 1, 2, 3, 4. चले हमारे मेंस टेनिस में तो सिर्फ एक पाकिस्तान नंबर 1 अकील खान है, बाकी रिवॉल्व हो रहे हैं. हमारे 1, 2, 3, 4 सेम लड़कियां टेनिस खेल. नेशनल में विमेंस का टूर्नामेंट नहीं कराते, कहते हैं कि एंट्रीज़ नहीं आएंगी. सही है, कुछ में एंट्रीज़ नहीं आती होंगी, मान गया मैं. विमेंस की वो ट्रॉफ़ी भी देनी पड़ेगी, उनको डेलियाँ भी देनी पड़ेंगी, उनको पैसे भी देने पड़ेंगे. इतने बच्चे विमेंस, इतने लोग टेनिस खेल रहे हैं इधर मुल्क में जो लड़कियां टेनिस खेल रही हैं. आई ऑल्सो हैव वन प्लेयर हु प्लेज विद मी. देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट. अब आप मुझे बताएं, मैच खेल रही हैं लड़कियां, they're wearing appropriate gear, the international gear, not even shorts, they're wearing tights and they're playing tennis. Look at the environment you're creating for them. They're like 70 random dudes, you know, standing at the back of the fence watching them play, and they're like, you know what, we don't want to play in this environment. Bahar jaake, yes, there are spectators, but they are spectators, not creeps. You know, so you have to create an environment for girls in this sport, because I would say there are some really good tennis players developing from Pakistan right now in women, but they have no idea on. अगर वही बात होगी ना कि मतलब कि वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट लीग है. उनको तो पहले अपने अटायर से और 10 चीज़ों से दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हर्डल्स एंड स्ट्रगल्स टू बी एबल टू इवन लाइक play. Yes. But Nameed, this can go on for hours and hours and hours and hours. Quite an insight on the tennis side, and I'm excited for some of these tennis Pakistan fanatics to look at this interview and then say what, and I get like a buzz of WhatsApp and voice calls, you know, ye tumne kya keh diya, you know, and like I would finish this in a way that, like I said, cricket, hockey and tennis, the 3 best performing sports in Pakistan, and even the 3 best performing federations in Pakistan. All I ask for my tennis federation is to become self-sufficient, because you have the market. Tennis is a market in this country. As soon as you start creating a business model in this, you'll see the perks of it. You know, that's pretty much it. If I have any complaint from the PTF, I would be like, create your own system rather than relying on grants, because there are a lot of federations now who are not relying on अगर नहीं grants मिले तो काम मतलब कि स्पोर्ट्स नहीं चलेगा, ग्रूमिंग नहीं होगी, फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, बंद रहेगा. चलेगा, लोगों के साल गुजरते जा रहे हैं, and then waiting on certain grants to come. Exactly. Nameer, I can go on and on with you, honestly, but we'll do it sometime later. Nameer, I'm going to give you 2 minutes. वैसे तो the stage was yours today, but I'm still going to give you 2 minutes. You can look into the camera and say whatever you want to say. Okay. Promote yourself, promote the event, whatever comes to your mind. The stage is yours. So, when I was discussing with Saira about, you know, the grassroots levels of tennis and how you can improve that, making it short, you know, grassroots पे जब आप काम करते हैं किसी भी sport पे, you have to spend money on the struggling player rather than the good player.
once you start spending money on the numbers, because there are going to be 10 people who are going to be struggling and 2 people who are going to be excelling. So once you start putting money on the people who are struggling, they're not going to be demotivated to run away from the sport. So at the end of the day, अगर सिर्फ 2 लोग रह जाएंगे टेनिस खेलने के लिए, तो स्पॉन्सर्स को क्या इम्पैक्ट दिखेगा, लोगों को क्या इम्पैक्ट दिखेगा? हाँ, अगर 12 लोग टेनिस खेल रहे होंगे जिसमें 2 एक्सेल करते रहें, तो स्पॉन्सर को भी लगेगा कि यार यस, दिस इज़ अ स्पोर्ट जिसमें पैसा डाला जा सकता है. सो ग्रास रूट की एक बड़ी ख़राब एक हमारी एक वो है कि जो लगता है कि बस बच्चों को ले आओ और छोटे बच्चों को टेनिस खिला दो या क्रिकेट खिला दो या फुटबॉल खिला दो. It's about spending money on them. And lastly, you were talking about, we run a tennis academy here in Karachi, and all I'm focused on here is I tell my players that until and unless you're not going to compete with the best, that means you do have to travel, you do have to play competition. Any coaching you can get from anywhere in the world is not going to make any change on you, because it's an individual sport. You have to compete with the best. Only competition makes you get better in this. No sort of coaching or even like practicing for like thousands of hours, and if you're not competing, you wouldn't understand the pressure of the tournament. You wouldn't understand, the mental motivation for it. So yeah, that's pretty much it. I hope this podcast really touches some people to understand that all I'm saying is we can create a new system together, maybe, or even if you want to do it separately, just come towards a self-sufficient model in which people think, you know what, this sport can last. So yeah, that's pretty much it. Thank you so much. आई थिंक जिस तरीके से नमीन ने ब्रेक डाउन किया है ना, इससे ज़्यादा ईजी वे में किसी को मुश्किलाहत नहीं होनी चाहिए समझने के लिए कि एक्चुअल इशू किधर है और एक्चुअल मसला कहाँ है. And honestly, I don't have any bias. I'm not one of those who are just going to come here and talk bad about the federation. It's just it's just an advice. Yeah, it's an awakening. It's just an advice, Wake up, करें आप ये कोशिश You're losing करें. talent. You will see so many people developing. नमी, थैंक यू सो मच. Thank you. एंड आई होप टू सी यू सून, एंड इंशाल्लाह मैं वापस आऊँगी टेनिस खेलने के लिए. बस मुझे ये बता देना कि लेफ्ट साइड को भी किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि मेरे प्रॉपर बाइसेप्स बन चुके थे राइट साइड पे. Thank you so much, guys. I hope you love this podcast, and I'll see you next week with a new guest. Peace out.